ओके, सब कनेक्ट हो गए। हाँ, तुम्हारा वो सीआर आया है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। सीआर आया है? इज सीआर देयर? नो सर। तो वो कहाँ पे है? उसने मुझे लगता है कोई भी क्लास अटेंड नहीं की। और वो कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं खेल रहा है? उसको बहुत शौक है उसका। नहीं, वो गया था एक दिन। हाँ, यासिर, अगर यासिर है तो, या कोई और है, वो इसका स्क्रीनशॉट लेगा अटेंडेंस का और मुझे भेज देगा। सो इसमें जो पहली रिलेशनशिप हमें मिली वो था सिग्मा वन इज इक्वल टू एस वन इज इक्वल टू सिग्मा वन। और देन दूसरी वाली जो हमें मिलेगी बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब ये वो पेज मेरे पास है भी नहीं। सो यू वुड हैव गॉट n by 2 into sigma 2 is equal to s2 minus sigma 1 s1 plus n times sigma 2। तो सिग्मा 2 का कुछ खत्म हो जाएगा तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस सिग्मा 2। सो यू वुड एक्चुअली गेट s2 minus sigma 1 s1 plus twice sigma 2 is equal to 0. So this would be first Newton's identity, this would be second. Similarly, you would get others, right? So you would get S3 minus sigma 1 S2 plus, I think ये होगा, ओके। हाँ, हम चाहे तो यहाँ सिग्मा 1 की जगह इधर कुछ लगा सकते हैं ना, बेसिकली। लेट मी, अगर मुझे सिग्मा 1 S1 के बराबर है, सो आई कुड राइट S2 minus sigma 1 square plus twice sigma 2 is equal to 0. So if you want to find S2, you can find it S1, इसी तरह से S3, so on and so forth. तो एक और इसी तरह से मिल सकता था हमें। You will get this thing. So similarly, you will get another one that would be, okay, you will get S1, let me write it down, into sigma 2, then minus S2 sigma 1 plus S3 is equal to 3 times sigma 3. So this would be another relation जिससे हमें मतलब दूसरे मिल सकते हैं S1 S2। एक्चुअली इसमें दोनों ही चीजें हैं। तो अगर तुम्हें सपोज तुम्हें S1 पता है, ठीक है ना, तो तुम यहाँ S1 सब्स्टिट्यूट करोगे और सिग्मा 2 इवेलुएट करोगे। और अगर तुम्हें सिग्मा 1 पता है तो सिग्मा 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और S2 को निकालो। And if you know sigma i's, you can find si's. And if you know sigma i's, you can find, मतलब si's अगर पता है तो sigma i's, क्योंकि जस्ट मतलब सेम प्रोसीजर आ जाएगा। तुम्हें पहली इक्वेशन से अगर S1 या सिग्मा 1 दोनों में से क्या तुम्हें पता है वो है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। सो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। सो इन जनरल you would get the formula summation, जो कि हमें चाहिए था, न्यू runs from 1 to k minus 1 raised to power k as sigma s nu sigma k minus nu। ये ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन up to k, then plus होगा अपना cos k times sigma k। yes, this is equal to 0, यही था ना अपना, right? So these are VAT's relations भी कहते हैं, but Newton's identities is better. From these identities, मैंने बोला ना, अगर तुम्हें सिग्मा आइज पता है तो एस आइज मिलेंगे, अगर एस आइज पता है तो सिग्मा आइज मिलेंगे। इसके बाद है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, वो ये है that coefficients are what we call the zeros of a polynomial। ये थोड़ा वेग सा स्टेटमेंट है कि zeros, what do we mean by it? Zeros of a polynomial are continuous functions of its coefficients। मैंने बोला थोड़ा सा वेग सा स्टेटमेंट है।
तो मतलब बाय एंड लार्ज इसका मतलब ये है, सपोज तुम कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा चेंज करोगे, राइट, तो जीरोस भी थोड़ा सा ही चेंज होंगे। यानी सपोज तुमने कोई पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल मान लो ए एन जेड रेज पावर एन प्लस बी एन जेड, सॉरी, ए एन माइनस वन जेड रेज पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन सो फोर्थ ए वन जेड प्लस ए नॉट। तो अगर तुमने कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा, अगर तुमने कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा चेंज किया और कोई दूसरा पॉलिनोमियल निकाला, सो इसके जीरोस और इसके जीरोस में ज्यादा फर्क नहीं होगा, मतलब इट वुड डिपेंड अपॉन जो तुमने कोफिशिएंट्स चेंज किए, वो आइडिया है। मतलब फॉर एनी स्मॉल चेंज इन द कोफिशिएंट्स वुड ओनली रिजल्ट इन अ स्मॉल चेंज इन द जीरोस। सो ऑफ कोर्स ये तो हो गया इसका मतलब आइडिया, लेकिन जो फॉर्मल स्टेटमेंट है थ्योरम की, सो लेट मी स्टेट दैट, अब जो तुम्हारे नोट्स में है यहाँ ये ठीक से आया नहीं है, तो इसलिए, और मुझे इसकी स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं है, इट्स नॉट क्लियर। तो इसीलिए जो मैं तुम्हें कराऊंगा वो तुम्हारे नोट्स, थ्योरम ऑलमोस्ट वही है, प्रूफ भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन थोड़ा इट्स मोर क्लियर, मतलब मेरे हिसाब से ये ज्यादा क्लियर है ये इस तरह से अगर इसको स्टेट करें। सो लेट मी डू दैट। लेट पी जेड बी ए monic polynomial of degree, monic means जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1, monic polynomial of degree n bigger than equal to 1 with m distinct roots। इसमें ये जरूरी है कि with m distinct roots, let's call them z1 z2 up to zm। of course 1 is less than equal to m is less than equal to n। अब अगर m less than n है, so it would have multiple zeros, they would have some multiplicities। Having multiplicities, each zero has multiplicities, having multiplicities, let me call it alpha 1 alpha 2 up to alpha m। तो मल्टीप्लिसिटीज का मतलब है, ये मैं जरा यहाँ रफ पे रखूंगा। मल्टीप्लिसिटीज का मतलब क्या है, पहले तो इसका ये मतलब है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा m, इनका सम जो है वो डिग्री होगा। और फर्दर मोर इसका मतलब ये भी है, चूंकि ये मोनिक है, p of z would be product z minus zi, I runs from 1 to m, or whole raised to, मतलब this is what I mean by it has got m zeros each with multiplicity, मतलब alpha m zeros with alpha m multiplicity alpha m। then इसके बाद अगर ऐसा है, then for any epsilon positive such that the closed balls B zj epsilon closure, and closed balls, by that of course you know, चलो वैसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, all z belonging to C such that z minus zj is less than equal to epsilon। अगर हम कोई ऐसा एप्सिलॉन ढूंढे, कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर सच दैट जब मैं इसको हर एक जीरो जो है इसका उस पर एप्सिलॉन बॉल बनाऊं तो वो आपस में डिसजॉइंट है, such that the closed balls these are disjoint। अगर मैं disjoint balls उस तरह का एप्सिलॉन चुनूं कि हर जीरो के अराउंड एक बॉल जो है एप्सिलॉन रेडियस की वो डिसजॉइंट हो, ओके, देन या सीधे I should say there exists a delta for every epsilon, there exists a delta। of course delta would depend upon epsilon as is the case always, a positive number such that any n degree polynomial, any nth degree polynomial, आई थिंक इस तरह से ये स्टेटमेंट तुम्हारे नोट से बेटर है ना, ये स्टेटमेंट मुझे लगी इस तरह से अगर इसको करें, एनी nth degree polynomial which is again monic, चलो मैं monic लिखता हूँ फिर से,
monic nth degree polynomial q of z equal to z raised power n plus bn minus 1 into z plus so on and so forth b1z plus b0 such that with of course coefficient slightly closer to the coefficients of the given polynomial ak minus bk less than delta. अरे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे एक गलती हो गई. हाँ, तो pz को मुझे लिखना था pz is equal to z raised power n plus an minus 1 z raised power n minus 1 plus ये तुम कर सकते हो, वैसे भी ये रिकॉर्डेड भी होगा. तो pz ऐसे, तो pz इसके बराबर है ये मोनिक पॉलिनोमियल. अगर इसके कोएफिशिएंट्स कोई मतलब I can choose a polynomial such that the coefficients of that polynomial are closer to the coefficients of the given polynomial with, of course, each coefficient has to be closer. K runs from 0 to n minus 1. Has this polynomial, every nth degree polynomial whose coefficients are closer to the coefficients of the given polynomial, this polynomial would have, every polynomial with coefficients closer to this would have exactly alpha m zeros within this open disk. Has exactly alpha j zeros or roots, whatever, zeros, counting multiplicities, of course, counting multiplicities in b z1 epsilon, zj epsilon, sorry, open, यहाँ पे closed नहीं है. j runs from 1 to up to n. कहने का मतलब अगर कोएफिशिएंट, मतलब हर कोई पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट्स इसके क्लोज होंगे गिवन पॉलिनोमियल, तो जिस सर्कल में या जिस यूनिट, जिस बॉल में इसका जो जीरो होगा ऑफ mth, मतलब अल्फा m मल्टीप्लिसिटी, then this polynomial would also have that many zeros within that disk, within that open disk. यानी अगर कोएफिशिएंट्स क्लोजर हैं तो जीरोस भी ज्यादा दूर नहीं है. तो which means that, मतलब इसको रफली हम कह सकते हैं zeros of a polynomial are continuous function of its coefficients. अगर कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर हम डोमेन में थोड़ा सा क्लोज जाएं किसी पॉइंट के, तो रेंज में भी ज्यादा फर्क नहीं आता, तो कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होती, फॉर अ स्मॉल चेंज. तो ये तो होगी स्टेटमेंट. प्रूफ भी इसका कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग. प्रूफ जो है तुम्हारे, मतलब प्रूफ ऑलमोस्ट मैच होता है उसके साथ, लेकिन अब चूंकि मैंने स्टेटमेंट ही बदल दी तो आइडिया सेम है, जो वहां है वो इधर भी है. ओके, प्रूफ. लेट एप्सिलॉन बी एज इन द स्टेटमेंट. एज इन द स्टेटमेंट मतलब कि, मतलब ये जो एप्सिलॉन बॉल्स है सेंटर्ड एट ईच ऑफ द जीरोस, क्लोज्ड बॉल्स, दे आर डिसजॉइंट. तो मतलब एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन हमारे पास ऑलरेडी है. सपोज एप्सिलॉन पॉजिटिव है और जो क्लोज्ड बॉल्स हैं on centered on the zeros of the given polynomial pz, वो डिसजॉइंट है. तो अगर ऐसा है, define C sub j to be the boundary of those क्या बोलते हैं, balls या discs, whatever. Z minus Zj is equal to epsilon. J runs from 1 to up to m. तो ऐसा हम करेंगे. Now by the assumption on epsilon, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट डिस्क्स थे या डिसजॉइंट डिस्क्स थे, तो ये सर्कल्स भी डिसजॉइंट होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो उनका हिस्सा है. बाय द assumption on epsilon, the circles CJs are disjoint. Let me call it Vj be equal to minimum over Z belongs to this circle Cj of mod of Pz.
J runs from 1 to m. पहले तो ये मिनिमम एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट. सर्कल इज अ कॉम्पैक्ट सेट. तो अगर वो कॉम्पैक्ट है और कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो मिनिमम एज्यूम करती है. एक्चुअली ये मिनिमम एज्यूम होगा, इसका एग्जिस्ट भी करेगा और ये कहीं कोई वैल्यू है जो इसमें है. फर्दरमोर दिस वुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. नॉन नेगेटिव तो होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इसके जो जीरोस हैं वो इस सर्कल का सेंटर है और हम सिर्फ सर्कल पे ले रहे हैं इसके वैल्यूज. सो व्हाट डज दैट मीन? सो वेयर वी नो, दो चीजें हमें पता है इसके बारे में. VJs are attained, क्योंकि इससे मुझे डिवाइड करना है. I want to ensure it's not zero. Attained, चलो रीजन भी लिखते हैं. Because for each J, mod of PZ is a continuous function on a compact set. Compact set. So also, जो कि मैं इससे पहले कहाँ लिख रहा हूँ, also VJ is strictly positive. वो भी मैं बता ही चुका हूँ because the zeros जहाँ पे vanish होगा, zeros of P lie at the centers of the disjoint circles CJ. J runs from 1 to, क्योंकि इसके m zeros है. Okay, next हम क्या करेंगे? Let rho J runs from 1 to up to m be defined as follows. Let me turn the page. Rho J, it would be maximum. Let me write it as maximum where Z belongs to the circle CJ. Summation, let me write it. K runs from 0 to n minus 1 mod of ZK. Iska maximum on the circle, this expression. Now we choose, important step. We choose BK where K runs from 0 to up to n minus 1. The coefficients of our polynomial जिसकी वो property होनी चाहिए. We choose QZ. मैंने मतलब स्टेटमेंट में मैंने QZ का मेंशन किया था. Of course मैंने किया है. Okay. So B's already है. तो we choose our BKs in such a way such that पहले तो ये है कि BK minus, or let me write AK की बात है. BK is less than delta with delta positive, और ये जो delta positive है ये मैं लूंगा such that delta into rho J is less than VJ. अब remember this, ये जो delta J and VJ हैं, they have come from epsilon. मतलब ये जो CJ है जहाँ पे हमने maximum लिया, these are epsilon disks. So this delta depends upon epsilon. Furthermore, ये जो rho J है, this is of course not zero, क्योंकि जब मैं k का power 0 दूंगा, so it would be actually अंदर जो है वो है 1 minus something. K runs from चलो 1 to n minus 1, so it is actually bigger than 1. So this is, so delta would be less than this positive number, of course. तो हमें इस delta को इतना छोटा दिया, मतलब हमें delta की choice करनी थी ना, मतलब we choose BK within the delta radius of AK, where delta is less than BJ by rho J. All perfectly all right. मुझे मेरे पास में कोई problem है. J runs from 1 to n. Of course, this delta depends upon epsilon because rho J and VJ depend upon epsilon because CJ depends upon epsilon. I hope that's clear. Then, अब है हमें जो काम करना है. Then we have, for all things on this boundary, for all Z belonging to the CJ, we would have
qz minus p of z. And remember, these are monic polynomials, तो highest power तो खुद ही cancel हो जाएगा. तो बाकी बचेगा हमारे पास ये summation k runs from 0 to n minus 1 bk minus ak into z raised power k, which is less than equal to cos summation k runs from 1 to n minus 1 mod of bk minus zk into mod of z raised power k. Bk minus ak, sorry, is less than delta for all k, so this is less than delta. Summation k runs from 0 to n minus 1 into mod of zk, which is less than, what do I have? So it is less than delta. Now this thing is actually less than, कहाँ गया मेरा? ये जो zk है इसका जो maximum है ना? So इसका maximum rho k है, तो this is less than equal to, this should be rho, should I say, what is this? J, of course. Rho j इसका नाम है, but delta rho j is less than Vj. But Vj is the minimum value of the polynomial on the disk, on the circle. So the minimum has, so it would be less than equal to, of course, this is less than, this is less than, and then this is less than equal to mod of Pz. Mod of Pz on Cj, क्योंकि ये उसका minimum value था on this disk. अगर मैं पीछे जाऊँ तो, हाँ, this is the minimum of Pz on this disk, so it means Vj would be less than equal to mod of Pz. So I have something like, हमारा काम हो गया, Qz minus Pz is strictly less than mod of Pz on the boundary of this disk, on Cj. Okay, now we obviously would apply Rauch's theorem. Boundary पे strict inequality है. Therefore, by Rauch's theorem, हमारा काम हो गया. Rauch's theorem हमें कहता है Pz and जो दूसरा polynomial है, what was that? Qz minus Pz, of course उसको plus Pz कर दो, जो बन जाएगा is equal to Qz. These two polynomials will have same number of zeros. Will have same number of zeros inside Cj, inside the disk. Same number of zeros. Namely, क्योंकि Pz के कितने zeros हैं वहां पे? It has alpha j zeros. Actually, it has zero. इसका है zj वहां पे, लेकिन it is of multiplicity alpha j. तो यानी exactly उसके alpha j zeros है वहां पे. तो इसका मतलब जो Qz के हैं उसके भी उतने ही होंगे. That's what we have to show. Namely, let me call it alpha j, counting multiplicities, of course. ये तो है ही, ये तो सारा चक्कर ही उसी का है. मैं चाहूंगा तुम इसको ठीक से देख लो, ये important theorem है. In the interior of this circle, जहाँ पे inequality hold करती है, that is inside P Zj epsilon. Of course, for each, चूंकि सारा कुछ j runs from 1 to up to m. So that finishes our theorem. ठीक है, मैं चाहूंगा इसको तुम अच्छे से पढ़ लो, ठीक से देख लो. Important theorem है. इसके बारे में तुम्हें कुछ पूछना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एंड करना चाहूंगा. इन केस जस्ट तुम्हें कुछ पूछना हो, you can. हाँ, जल्दी से बता दो मुझे. Anybody home? Hello out there. No sir. No sir. हाँ, पूछ लो. Sir, it is simple. वैसे ये वाला सिंपल था, ये थ्योरम सच में उतना, लेकिन इसको समझने की जरूरत है ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब कि अगर कोफिशिएंट्स मतलब थोड़े से क्लोज आ जाएंगे तो जीरोस भी, जो दूसरे जो भी पॉलिनोमियल्स फिर उस रीजन में जिसकी कोफिशिएंट्स आएंगे within a region of the coefficients of the given polynomial, corresponding coefficients, then zeros would not be also far behind. वो भी इसी के अंदर होंगे जहां उसके जीरोस थे, जिन बॉल्स में उसके जीरोस थे.
ओके, दैट वाज अ थ्योरम। लेकिन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ताकि तुम वो न्यूटन रिलेशंस को थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो मैं ये चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, x प्लस वाई प्लस, मैं चाहता हूँ वो न्यूटन जो आइडेंटिटीज है उसको तुम यूज करके ये प्रूव करो। सपोज दिस इज 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट, and x into y into z is equal to 3. Then find the least power n, least value हमें ढूंढना है, such that x raised power n plus y raised power n plus z raised power n is an integer. n का least value क्या होगा, such that this is an integer. Given ये है x plus y plus z is 1, xy plus yz plus zx is equal to 2, and x into y into z is equal to 3. So what should be the least value of n, such that, जरा मैं चेक करूंगी ये, such that xn plus y raised power n plus z raised power n is an integer. हाँ ये ठीक है। बाय द वे, अगर तुम इसको मतलब मैं थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर z1 z2 z3 0 ये है ना, ये these are first three, मतलब दिस इज, अगर मैं 3 वेरिएबल्स लूंगा तो ये फर्स्ट all the elementary symmetric functions होंगे उसके। अब तुम्हें ढूंढना है पावर्स फंक्शन, मतलब इट्स लाइक, मतलब ऑब्वियसली न्यूटन रिलेशन से आ जाएगा। यू आर गिवन सिग्मा i's एंड यू हैव टू फाइंड सम si बाय द वे, तो उससे तुम्हें ये मिल जाना चाहिए। तो तुम्हें करना और मुझे कल बताना क्या मिला फिर। ओके, लेट मी फिनिश दिस। हाँ यासिर, तुमने इसका वो लिया? यस सर, यस सर। वो कहाँ है तुम्हारा, क्या नाम है उसका, उमर है उसका नाम? सर ये सर वो घर पे सर, वहां पर नेट है ना स्लो सर ज्यादा। साउथ में सर, शुपियन। वो शुपियन रहता है? यस सर। ओके, तो चलो इसको ओके मैं खत्म करता हूँ, अगली बार मतलब कल के लिए, कल देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप इट हियर।